हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के बारे में एंड सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, दोनों के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गो। सबसे पहले तो वेब 1.0, वेब 2.0 एंड वेब 3.0 क्या है। फर्स्ट, वेब 1.0। सबसे पहले जो वेबसाइट्स बनाई जाती थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल अर्ली एज, जब टॉम बर्नर ली ने वेबसाइट्स को डिज़ाइन किया था, that was based web 1.0, that was basically a web 1.0 वेबसाइट जहाँ पर HTML टेक्स्ट होगा, कुछ HTML में वेबसाइट बनी होगी, हाइपरलिंक्स होंगे थोड़ी बहुत, एंड वेबसाइट में थोड़ा बहुत कंटेंट होगा। दैट इज़ जस्ट वेब 1.0। आप गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं वेब 1.0 कैसी दिखती थी, ठीक कैसी दिखती थी उस टाइम में। सो मूविंग टुवर्ड्स वेब 2.0, बेसिकली आज वेब 2.0 वेबसाइट्स भी देखने को मिलेंगी और हमें वेब 3.0 वेबसाइट्स भी देखने को मिलेंगी। वेब 3.0 यानी there is no centralization, but in a web 2.0 there is centralization which plays an important role, but in case of web 3.0 there is no one. We control our data in that case. So अगर आपको और जानना है वेब 1.0, 2.0, वेब 3.0 में, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है कोरा की, जहाँ पर मैंने एक आंसर किया था, आप उसे जाके पढ़ सकते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स टू द एप्लीकेशंस। तो बेसिकली एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन इज द थिंग विच इज असाइंड अ स्पेसिफिक गोल। एक स्पेसिफिक गोल को करने के लिए वो बना होता है, एंड एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा उसे करने के लिए, जो वो परफॉर्म करेगा। सो बेसिकली इट इज़ अ एन एप्लीकेशन। सो अब बात आती है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस में। सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्या होते हैं एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस क्या होते हैं? फर्स्ट, आई वांट टू मेक 3 diagrams, so let's first make them. ये मेरा एक नोड है, there are different devices or nodes which are connected to this node. It is the case of centralization or centralized. Okay, so it is a node and these are different nodes which are connected to this node. If this node fails, तो सारी जो nodes हैं जो connected हैं इससे, वो सारी fail हो जाएंगी. This is the meaning of centralization. Take it as an example of Facebook. ये Facebook का सर्वर है और ये सारे डिवाइसेस हैं जो सर्वर से कनेक्टेड है। अगर फेसबुक चाहे तो इन अपने सर्वर को डाउन कर सकता है और इन सारे एप्लीकेशंस को क्लोज कर सकता है। सो इन दिस केस ऑल डिवाइसेस विल नॉट वर्क। अब बात आती है डिसेंट्रलाइजेशन की, कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सो देयर इज वन नोड, देयर इज वन नोड, देयर इज वन नोड, another one, another. You can assume like this. So this is connected to this is connected to this is connected to this, and likewise all. They are also interconnected. It is just like decentralization, or we can also connect here and different. So in large scale we can take such points, but for now it is enough. अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है? ये नोड्स हैं, ये कनेक्ट कर दिया मैंने ऐसे, ओके, जैसे कनेक्टेड टू दिस, ये कनेक्ट हुई इससे, ये कनेक्ट हो गई। कोई एक नोड अगर फेल होती है, मान लो ये नोड फेल हो गई, they will still work because they are interconnected. They do not depend on this node. So this is distributed.
अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में अराइज हुआ या नहीं, बट आई वांट टू डिस्कस दिस क्वेश्चन विच इज, अगर दोनों में ही नोड का रोल नहीं है, मतलब सेंट्रलाइजेशन का रोल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिसेंट्रलाइज में, then what is the difference between decentralized and distributed? So basically distributed means computation is spread across multiple nodes instead of just once. Okay, computation power will be given to all nodes instead of just one. So take it just like a Google have just adopted this thing, a distributed architecture to speed up its computing power. डिसेंट्रलाइज तो ये बेसिकली हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर. इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, this is also distributed and also centralized because it is handled by Google. ओके, तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकलता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क और सिस्टम दोनों हो सकते हैं. यानी एक सिस्टम सेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है. एक टाइम पर एक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड भी है एंड सेंट्रलाइज्ड भी है. इट इज करेक्ट. ओके, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड. डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हो रहा था कि एक नोड होगी जो सबको इंस्ट्रक्शंस देगी कि तुम्हें ये काम करना है. ओके, बट in case of decentralization, no node is instructing any another node to what to do. Okay, so this is about decentralized. Okay, so I also want to discuss one thing. So I want to discuss a model which is server client model. So basically, what is server client model? Server client model is just, I want to explain like this. It is my device. This is a server. Take it as a Facebook. This is my app, Facebook app. I requested this. It gives me the response. What is this? This is a server client architecture or model. It is client, which is me or you maybe, and this is server. So it is server client architecture or model. There are two other different models which we will talk about them later. So अब एक क्वेश्चन और है, can a system be both distributed and decentralized? Can a system be both distributed and decentralized? Yes, its answer is yes. Why? Let me explain. Bitcoin is distributed. Take example of Bitcoin. Sorry. Bitcoin. It is distributed. अगर कोई एक नोड भी फेल हो जाती है बिटकॉइन के केस में, बिटकॉइन नेटवर्क के केस में, it will not stop. It will still work because it is a distributed network. It is a
distributed network. So here we find that decentralized network can also be distributed network. So डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क हो सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है. तो डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों केस में सेंट्रलाइज नेटवर्क भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है एंड डिसेंट्रलाइज नेटवर्क भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है. डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कोई एक नोड फेल हो जाती है तो दूसरा या तीसरी नोड काम करना बंद नहीं करेगी. और डिसेंट्रलाइज के केस में वहाँ पर कोई भी नोड किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं देगी. बट इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, just like Google, which gives instruction to all other nodes what they have to do. So this is the basically difference between centralized, decentralized and distributed. Distributed is with both. First one centralization and decentralization दोनों के साथ उसे इन्वॉल्व किया जा सकता है. तो distributed, decentralized and centralized. Complete. सो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के बारे में हमने बात किया. डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. जो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होगा वहाँ पर कोई भी एक सेंट्रल एंटिटी नहीं रहेगी जो उसे कंट्रोल कर सके. जस्ट लाइक फेसबुक में हमारा एक सर्वर रहता है, अगर वो चाहे तो फेसबुक को शट डाउन कर सकता है. बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस but in case of decentralized applications there is no such thing. ऐप कभी भी शट डाउन नहीं होगा जब तक वो नेटवर्क डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जो कि होगा नहीं. So these were the all thing which I wanted to discuss. So that's it.